Hello and welcome, my dear students, to Unacademy Attempts. I welcome everyone. कैसे हो आप सब लोग? Let me know in the chat box. Am I perfectly audible and visible? सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करें. Am I perfectly audible and visible? Let's begin, my dear students. और आज के इस important session में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू व्हाट एटॉमिक स्ट्रक्चर. यस, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करेंगे. आई होप सो आप सारे बच्चे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द lecture, let me tell you that unlock bigger savings are there in Unacademy right now. तो you will get 20% ऑफ. सारी जितनी भी IIT JEE सब्सक्रिप्शन है उन पे आपको 20% ऑफ मिलेगा. नंबर वन. एंड नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको 7 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा. फॉर एग्जांपल जो बच्चे 2026 में IIT JEE देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए अनअकैडमी के पास एक कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 24 मंथ्स की है, मतलब 2 साल की है, एंड प्लस 7 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है. लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, द प्राइस इज ओनली 54,000 रुपीज. अगर आपने कोड यूज किया PX001 तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल सकता है. क्लियर? जो बच्चे 2025 में जेई का एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 1 साल का कोर्स है, एंड उस 1 साल के कोर्स के साथ साथ 7 मंथ्स का, ठीक है ना, 7 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी है. द प्राइस इज ओनली 38,399. लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कोड यूज किया PX001 तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल सकता है. अगेन जो बच्चे 2024 में जेई देना चाहते हैं उनके लिए कोर्स की ड्यूरेशन है 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन at just 14,149 rupees. Again, my dear students, let you use the code PX001. देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड्स प्लीज. चलिए, हाय हाय, हाउ आर यू. यस, इसके बाद हमारे पास है ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट सीरीज फॉर जेईई मेंस 2024. लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके 14 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कराए जाएंगे. क्लियर? एग्जाम से पहले ही आपको एग्जाम की फीलिंग दी जाएगी. बेसिकली घर बैठे आप जेईई का एग्जाम दोगे. जो बेसिकली जेईई एग्जाम का पैटर्न होता है सेम ये मॉक टेस्ट उसके बेस पे होंगे, एंड ये सारी चीजें जो है लाइव होंगी. बेसिकली रैंकिंग्स लाइव होंगी, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा लाइव, डिटेल सॉल्यूशंस लाइव होगा. Naveen, okay, Naveen, okay, Naveen. I'm doing great. I'm doing great. Thank you for asking. I'm doing great. ठीक है नवीन. तो डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, लाइव होगा. एंड लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, रैंक्स को अनाउंस किया जाएगा. रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 को अनाउंस किया जाएगा. क्लियर? एंड इसका जो प्राइस है दैट्स ओनली 1299 रुपीज. वो December 29 से स्टार्ट होने वाला है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फिर से कोड यूज किया PX001 फिर यहाँ पे आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा. एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स. वेट अ मोमेंट. परफेक्ट परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना. अगर फर्दर आपने कोड यूज किया PX001 तो आपको फर्दर यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है.
एंड 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो सो आई रिकमेंड एवरीवन, जितने भी बच्चे जिनको इस साल 2024 में जेईई मेंस का एग्जाम देना है, दे कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि आप एग्जाम से पहले एग्जाम दोगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आप एग्जाम दोगे एंड पूरे प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। My dear students, we have Nexus crash course batch for JEE Mains 2024. Clear? Nexus crash course batch for JEE Mains 2024. ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है एंड इस बैच में आपके टॉप एजुकेटर्स है जैसे अरविंद कालिया सर, नीरज कुमार सर एंड मोहित रेयान सर। एंड लेट मी टेल यू, इसका प्राइस बहुत बहुत कम है माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 1999 रुपीज। क्लियर? अगर आपने फिर से कोड यूज किया PX001 तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस बैच की हाइलाइट्स क्या है? टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे एंड कैसे पढ़ाएंगे आपको? जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स है, जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स है, ये टीचर्स वो सारे हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ाएंगे इन 50 लाइव सेशंस, इन 50 लाइव सेशंस। पढ़ाने के साथ साथ ये सारे टीचर्स PYQs एंड DPP को भी कवर करेंगे और कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लियरिटी। एनरोल कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, देर किस बात की। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट माय। So there is early board offer for class 11 students early Aramba batch जो ऑलरेडी 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड इसमें अगेन आपकी टॉप फैकल्टी है जैसे ब्रिजेश जिंदाल सर, पीयूष माहेश्वरी सर, विनीत लोम्बा सर एंड साथ साथ में आपको नीरज कुमार सर एंड मोहम्मद काशिफ आलम सर भी मिलेंगे। ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा जेईई मेंस एंड एडवांस का 2025। क्लियर? और जो बैच होगा इसमें आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी डिस्कस करी जाएंगी। तो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 7 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा एट जस्ट 38,399 रुपीज। अगेन माय स्टूडेंट्स, अगर आपने कोड यूज किया PX001 तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर? चलिए लेट्स मूव अहेड। देन वी हैव द अर्ली बोर्ड ऑफर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास अर्ली बोर्ड ऑफर है टारगेटिंग IIT JEE 2026। So there's early growth batch for JEE Main Advanced 2026। तो यहाँ पर बेसिकली 24 मंथ्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा प्लस 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा एट जस्ट 54,000 रुपीज, 54,000। क्लियर? तो हमारे स्टूडेंट्स, अगर आपने कोड यूज किया PX001 तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, 500 प्लस लाइव क्लासेस होंगी लेड बाय टॉप एजुकेटर्स। क्लियर? आर इन टेस्ट फॉर जेईई मेंस इन एडवांस। टॉप फैकल्टी अगेन यहाँ पर होगी, विनीत सर होंगे, पीयूष सर होंगे, काशिफ सर होंगे, नीरज सर होंगे एंड ब्रिजेश सर होंगे। क्लियर? सर इतनी सुबह सुबह इतने खूबसूरत कैसे लग रहे हैं आप? ठीक है, चलिए ठीक। देन वी हैव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसमें आप एनरोल कर सकते हो एवरी संडे 3 PM। क्लियर? एवरी संडे 3 PM यू कैन एनरोल इन दिस मॉक टेस्ट। क्लियर? Okay, my dear students, let's begin now. Let's begin now. Let's try for this question. Let's try for this question. Very, very simple question and basic questions. These are clear. Very, very simple and basic questions. These are basically, yes, you can try for these questions. So the question is again very, very simple. You have to calculate the number of electrons. You have to calculate the number of protons. Clear? In this very clear, this very element and in this very clear. Just calculate. Just calculate. So if I talk about O818, clear? So just calculate here now. Just calculate here now and let me know in the chat box. It's a very, very easy question. And let me tell you, my dear students, these MCQs are for boards basically. Yes, these are for boards basically. So today I conducted the session for only boards. Yes, only boards. Just follow these questions. So let me try the first one. If I talk about the oxygen,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आपको मिलेंगे? यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 8। बट अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है? a minus z। यस, that means 18 minus 8, clear? 18 minus 8, so you will get what? You will get what? 10 base। yes, so number of neutrons किसके बराबर होता है? That's basically mass number minus atomic number, so you get the value as 10। yes, is it okay? perfect, perfect। अगर मैं आपको बोलूंगा इस वाले एलिमेंट में मैग्नीशियम 1225 में, माय डियर स्टूडेंट्स, just calculate the number of neutrons। yes, calculate the number of neutrons। can you let me know in the chat box? calculate the number of neutrons। yes, just calculate the number of neutrons here। good, perfect, perfect। Naveen, perfect, you are doing great। yes, exactly, that's perfect, that's perfect। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली कितने मिलेंगे? यस, 13 न्यूट्रॉन्स, because 25 को आप माइनस करेंगे 12, you will get the value as 13। these are very basic questions and they're very important for your board examination, clear? Now if I talk about the bromine 35, yes, and 80, can you let me know the number of neutrons here? yes, can you let me know the number of neutrons here? perfect, perfect। the answer is basically 80 minus 35 and it will come out to be 45। that's perfect, that's perfect। let's move ahead now, solve this question। yes, we have an element with mass number 81, it contains 31.7% more neutrons as compared to protons, assign the atomic symbol। basically you have to calculate the number of protons। basically just calculate the number of protons, just calculate the number of protons, clear? And let me know the answer of this question in the chat box। jaldi jaldi sare bacche, let's have a try। hello creator, how are you? hello, welcome, welcome। hit the like button, my dear students, hit the like button, hit the like button। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। आपको दिया क्या गया है? लेट मी टेल यू। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लेट मी टेल यू, आपको मास नंबर दिया गया एंड द मास नंबर इज 81। यस, दैट्स गिवन। and just look at this statement, just look at this third statement। 31% more neutrons as compared to protons, 31% more neutrons as compared to protons, clear? just look at this statement, just look at this statement। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? मैं पेन डाउन करूंगा। 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स, क्लियर? more neutrons as compared to protons, clear? so that means मेरे पास जो एलिमेंट है उसमें इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, क्लियर?
तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स क्या है, क्लियर, ठीक है ना, मोर न्यूट्रॉन्स बेसिकली, यस, क्लियर। कहने से फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स की वैल्यू x, यस, लेट प्रोटॉन्स बी x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, अभी आप देखो प्रोटॉन्स की वैल्यू x है, तो x से कितने ज्यादा 31.7%, 31.7% ऑफ x, कहने से 31%, 31% ऑफ x, यस, कहने से and from this can I get the value of neutrons, yes we can get the value of neutrons, how, just do the cross multiply, 100x plus 31.7 divided by 100, clear, so you will get 131.7 divided by 100 and the value will come out to be 1.317x. This is the value and this is basically the number of neutrons, yes, ये basically क्या है, number of neutrons है, clear, so number of neutrons is 1.317x, clear। अब मुझे पता क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, दैट्स बेसिकली इक्वल टू द मास नंबर एंड दैट्स 81। अब प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन्स की वैल्यू x है एंड न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है 1.317x इज इक्वल टू 81, क्लियर। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x दैट विल कम आउट टू बी 35, क्लियर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बेसिकली 35 एंड हमारे पास जो एलिमेंट आएगा दैट्स ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है एंड मास नंबर 80। The idea clear? Just let me know in the chat box. Is the idea clear? सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करें, इज द आइडिया क्लियर? So let's move ahead now solve this question. Again this is going to be the very easy question. So an ion with mass number 56, तो एक ion है जिसका mass number क्या है 56, it contains 3 unit positive charge, clear, 3 unit positive charge, clear, and 30.4% more neutrons, clear, 30.4% more neutrons than electrons, clear, assign the symbol for the ion. Again you have to calculate the number of protons basically, yes, you have to calculate the number of protons. Just solve this question and let me know the answer of this question in the chat box, clear, let me know the answer of this question in the chat box. Just let me know in the chat box. I will try, my dear students, just try. I guess it is not the right answer of this question, so you can try again.
Let's try to this question. Again, this is going to be the easy question. So I'm just providing you some sort of hint. Yes, yes. Let you do one thing. Electrons की value आप x रखो, ठीक है? Electrons की value आप x रखो. And let me tell you one more important thing, my dear students. अगर मैं protons की बात करूंगा तो protons की value क्या आएगी? Clear? अगर electrons x है, अगर electrons x है, आपको पता ही होता है, generally हमारे पास अगर neutral atom होगा, तो उसमें electrons किसके बराबर होंगे? Protons के बराबर होंगे. But as per the question, there is 3 unit positive charge. मतलब 3 units क्या है? Positive charge. कहने से इलेक्ट्रॉन्स 3 कम होंगे. यस, इलेक्ट्रॉन्स 3 कम होंगे. अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या रखी? x. तो प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या आएगी? तो प्रोटॉन्स 3 ज्यादा होंगे. कहने से प्रोटॉन की वैल्यू x+3 होगी. क्लियर? यस, क्लियर. तो प्रोटॉन की वैल्यू x+3 होगी. Now see my dear students, अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है. And you know that number of neutrons is 30%, 30.4% more neutrons than electrons. Clear? 30.4% more neutrons than electrons. Now see, मैंने electrons को x रखा plus, clear, कि number of neutrons है, electrons के more than electrons, clear, more than electrons. So electron की value x है, कितने ज्यादा है? 30.4% of basically what? Of x. So from here I can calculate the value of neutrons. Yes, it will be 100x plus 30.4x divided by 100. So 130.4 divided by 100x. तो यहाँ से जो value आएगी that will be 1.304x. Clear? This is the number of neutrons basically. Clear? Also मुझे पता ही है अब number of protons plus number of neutrons इसके बराबर होता है mass number जो given है 56 and number of protons मुझे क्या मिला? x+3 plus number of neutrons मुझे क्या मिला? 1.304x is equal to 56. तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. It will come out to be 23. Clear? तो x की वैल्यू जो है that's 23 and 23 is what? Number of electrons. But what I have to calculate? Number of protons. तो number of protons क्या आएगा? x+3 and यहाँ पे x की वैल्यू 23 plus 3. So number of protons will come out to be 20. Clear? The number of protons is basically 26. Clear? So can I say now this is iron? Yes. 26 with mass number what? 56. Yes. And having 3 unit positive charge. So this is the answer of this very question. Clear? Yes. Yes, Suvarna, 26 is the right answer. Clear? Perfect. Now let's try this question, my dear students. Try this question. The question is consider an imaginary ion. Here this is the imaginary ion that you have to consider basically. Yes. What's the imaginary ion? X. Yes, this is 22. Number of protons, I can say yes, this is 48 and this is 3 negative. Clear? The nucleus contains A% more neutrons. Clear? A% more neutrons than the number of electrons. Clear? Than the number of electrons. The value of A is. You have to calculate the value of A basically. Yes, you have to calculate the value of A. Just have a try to this question, my dear students. Try to get the accurate answer of this question. Clear? Yes. Let's try, my dear students. Let's try to this question. Again, this is going to be very, very easy question. You can try for this question. Perfect, my dear students. Try for this question. Yes, I'm looking at your chats. You can try for this question. Yes, you can try for this question.
Can you try it, my dear students? Can you try it? Yes. So again, this is going to be the very easy question. For example, my dear students, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बेसिकली गिवन, यस इट्स 22, क्लियर. अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन गिवन कितना होगा, 22 प्लस कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और है, सो कहने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 25. क्लियर. वी नो दैट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू बेसिकली द एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास इज गिवन एज 48. क्लियर. नाउ प्रोटॉन्स कितने हैं, बेसिकली 22, तो यहाँ से न्यूट्रॉन का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इज इक्वल टू 48. क्लियर. तो यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी, 48 माइनस 22. क्लियर. यस, 48 माइनस 22, that will come out to be 26 basically. Yes, that will come out to be 26. Clear. Now see, my dear students, the nucleus contains a% more neutrons. Now see, percentage of extra neutrons मुझे दिया गया है. Clear. Percentage of extra neutrons कितना दिया गया है, contains a% more neutrons than the number of electrons. Clear. Than the number of electrons. तो electrons कितने मेरे पास है, clear. मेरे पास electrons है 25. प्लस मैं क्या करूंगा, देखो प्लस मैं करूंगा परसेंटेज, a% दिया गया है, तो a डिवाइडेड बाय 100 into 25. Clear. A divided by 100 into, क्लियर. दैट इज बेसिकली जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू दी गई है. क्लियर. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बेसिकली यस 25%, 25, क्लियर, प्लस a by 100 into 25. What does this actually mean? It actually means that a% more neutrons. So a% more neutrons as compared to electrons, तभी मैंने 25 की वैल्यू ली. क्लियर. सो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू दी गई है, यस न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 26, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीपल एंड एवरीथिंग. तो आपको जो ए की वैल्यू मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स, दैट विल कम आउट टू बी बेसिकली यस 4. So the value of a is basically, क्लियर. अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आएंगे, यू कैन इजीली सॉल्व. क्लियर. जस्ट डू वन थिंग, आपको a% कैलकुलेट करना है. जैसे a% को कैलकुलेट करने के लिए अब देखो यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रॉन्स दिए गए, a% मोर न्यूट्रॉन्स, सो आई विल से दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस करूंगा मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज यहाँ पे मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय कर लूंगा सीधे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली. यस परसेंटेज है तो इंटू 100 भी करूंगा. तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे कैलकुलेट हुए 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 25. क्लियर. तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ अगेन अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 25 इनटू कर लूंगा 100. क्लियर. तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 100, तो 25 1 एंड 4 से मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, 4 वैल्यू मिलेगा. ए की वैल्यू मुझे 4. क्लियर. आई होप दैट सारे बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. क्लियर. So I want basically everyone to solve such type of questions. Clear. Now can you solve this question? Can you solve this question, my dear students? Already हमने इस टाइप के questions को डिस्कस किया है. Can you just try this question? Yes. So the energy required to break 1 mole of chlorine bonds in chlorine is 242 kilojoule per mole. Clear. The longest wavelength of light capable of breaking a single chlorine bond is, yes. Let's try to this question, and I need the answer in the chat box. Clear. सारे बच्चे चैट बॉक्स पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी जल्दी. यस.
चलिए हमारे स्टूडेंट्स, फ्यू लेक्चर्स बैक हमने एक रिलेशन देखी। यस, हमने एक रिलेशन देखी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यस यस, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को हमने डेवलप किया था कुछ टाइम पहले, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। क्लियर? कहने से E किसके बराबर होगा? यस, एन एच न्यू के बदले कैन आई यूज C by lambda? Yes, I can use. Now what I have to calculate? I have to calculate the wavelength basically. कहने से wavelength का वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगा NHC divided by E. Yes, that's very very simple question again. तो lambda की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? Now what's the value of N? The number of moles, I can say yes. That's basically what? 6.02 into 10 की power 23. Clear? What's the value of H? It's Planck's constant. कहने से it's 6.62 into 10 की power minus 34. Yes. C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट कहने से it's 3 into 10 की power 8. Clear? Divided by E. What's the value of E given basically? It's given in kilojoules per mole. So it's 242. I can convert it into basically what? 242. I can calculate it, convert it into, so I can do 10 की power 3. Yes. Joules per mole, joules per mole. Clear? तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन नैनोमीटर 4949. Clear? That's the answer of this question. I hope आप सबने ये question की. Let's move ahead. Now solve this question, my dear students. Again, this is going to be the very very easy and important question. Just have a try to this question and try to solve this question. Clear? I'll be just waiting for you in the chat box. Solve this question as soon as possible. Hi, how are you? Yes, welcome. Okay, Moria, how are you? How are you? Just try for this question. Yes, I'm looking at your chat box.
I'm doing great. I'm doing great. Moria, I'm doing great. Perfect, my dear students. Perfect, perfect. Just have a try to this question. Again, this is very, very easy question. Okay? Again, this is very, very easy question. फ्यू सेशंस बैक हमने एक इक्वेशन को डिराइव किया कि लेमडा किसके बराबर होता है h डिवाइडेड बाय m इनटू न्यू क्लियर तो h डिवाइडेड बाय m इनटू न्यू नाउ पुट ऑल द वैल्यूज लेमडा किसके बराबर होगा तो इस प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 की पावर minus 34 yes again the mass is given basically that's 1.67 ठीक है ना 1.67 into 10 की पावर minus 27 clear and into what new की value is the value of new given yes the value of new is given basically clear that is 1 into 10 की power 3 meter per second clear so you will get the value of lambda and after calculating all these values you will get the value of lambda at 0.04 nanometer clear so 0.04 I guess what's the answer yes 0.04 nanometer clear so option 4 is the correct answer I guess is it 0.04 yes I guess there's a slide error just calculate the value and let me know the answer clear let's move on. So the energy of 1 mole of photons of radiation of wavelength 300 nm is clear so you have to calculate the energy of 1 mole of photons clear एक मोल photons की energy को calculate करना है तो कैसे करोगे my dear students कैसे करोगे yes my dear students try this the very very simple question yes So few moments back I told you my dear students E की value क्या होगी that's basically NHC by lambda. Now put all the values. Again this very very simple question. Put all the value जैसे number of moles की value यहाँ पे आप लोगे clear. Planck's constant का value आप use कर लोगे clear. C की value speed of the light की value का value आप यहाँ पे calculate कर लोगे ठीक है. Energy basically you have to calculate lambda की value दी गई है it's 300 nm you can calculate it into meter by multiplying it with 10 की power minus 9 clear 10 की पावर माइनस 9 मीटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्लियर तो आपको आंसर मिलेगा जूल्स पर मोल में उसके बाद आप अगर वैल्यू निकालना चाहोगे किलो जूल पर मोल में ठीक है ना किलो जूल पर मोल में तो आपको डिवाइड करना होगा 10 की पावर 3 क्लियर and the final answer will be getting is 399 kilojoules per mole clear that's a very very simple question clear let's have try to this question calculate the energy of 100 photons if the wavelength of light is 200 angstroms clear again the same relation I'm using is equal to nhc by lambda clear again I'm using the same relation my dear students ठीक है तो फ्यू मोमेंट्स बैक और फ्यू लेक्चर्स बैक मैंने आपको बोला जब वेव लेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रॉन्स में दिया होगा क्लियर जब वेव लेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रॉन्स में दिया होगा तो उस टाइप पे आप एचसी का वैल्यू क्या लोगे 12400 electron volt angstroms clear electron volt angstroms अब see my dear students you have to calculate the E key value n is the number of photons here so I can say 100 into SC key value 12400 clear electron volt angstroms clear divided by lambda what's the value of lambda is it given yes 200 angstroms 2000 angstroms clear so I'll pen down it as so this will cancel out basically this will cancel out 2 5 try to solve this question you will get the answer in E is equal to 620 electron volts clear if you try to get the value in the joules तो simply 620 को multiply कर लो 1.6 into 10 की power minus 19 joules क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है 1.6 into 10 की power minus 19 again this was a very very simple question yes
This was the very simple question. Again, this was the very simple question. Clear? Basic question tha. You can easily solve it. Yes. Just have a try to this question. A light source of wavelength 200 angstroms possesses energy 0.5 joule. The number of photons emitted from source is. Clear? You can easily try this question. Let's have a try, my dear student. That's a very simple question. Let's have a try. चलिए, perfect. Just very simple question. Clear? Again, this is going to be the very simple question. Already few moments back हमने एक relation को develop किया. Clear? A is equal to n h c by lambda. Clear? तो यहाँ से n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. कहने से it's e lambda divided by hc. Clear? So putting all the values, you will get the value of n basically. Yes, you will get the value of n basically. So this is very simple question. And my dear students, with this we have completed the MCQ wala session. And let's see you in the tomorrow's session. Till then, goodbye. So I'm going to end this session. So goodbye everyone. Goodbye everyone. Goodbye everyone. Clear? So let's end this session. Have a good day ahead.